BJP stands for Bhashan, Jumla and Propaganda, where speeches replaces real action. And NDA stands for, well, no prize for guessing, not delivering anything. Never underestimate the power of the common man. Today I rise here, not just to respond to the union budget that was presented by the Honorable Finance Minister for the year 2025-26, but also to expose the grand illusion it weaves. A mirage, a deception, or rather a golden deer budget. Well, all of you must be wondering, why am I referring to this budget as the golden deer budget? The 2025 union budget is nothing but a Marich moment from the Ramayana. An elaborate illusion designed to deceive. Just as the demon Marich took the golden form of deer to lure Ma Sita away, the NDA government has crafted a shiny, dazzling budget promising prosperity while hiding the economic catastrophe beneath. This budget might shimmer, but it's hollow as a treasure chest filled with air. It has flashy promises of tax cuts, economic growth, infrastructure hype to distract the common man, but beneath this illusion lies a brutal reality. Hidden indirect taxes, soaring inflation, slashed public spendings, and last but not the least, corporate giveaways. Just as Ma Sita was misled, the common people are being pulled away from financial stability straight into a fiscal wrecking ball. This government proudly proclaims no income tax for incomes up to 12 lakh rupees. But behind the scenes, they silently ensure the lost revenue is recovered through rising fuel prices, inflated service charges, hidden taxes on daily essentials, and the middle class, much like Lakshman warning Ma Sita, is skeptical, but BJP's propaganda and PR machinery is desperately working overtime to ensure that the common man and the people of this country still chase the golden deer anyway. What is given by one hand is being swiftly taken by the other. Just as in Ramayana, by the time people realize and recognize the deception, the economy has already been handed over to the Ravanas of crony capitalism, while the common man is left struggling to afford groceries, fuel, travel, healthcare, and even a simple movie night, all while being taxed for merely just existing. Madam, the budget presented by the NDA government is a masterclass in half-truths, half accountability, half delivery of schemes, and half-hearted governance. From half-built houses under PMAY to half-achieved farmer income targets, the government continues to sell dreams while delivering only fragments of reality. Infrastructure projects remain half-finished, welfare schemes reach half the beneficiaries, and their failed economic policies cater to half the population, leaving the rest in uncertainty. This is not a vision for developed India. It's a half-baked agenda wrapped in propaganda. Make no mistake, much like demonetization, GST, and the draconian farm laws, the full extent of devastation will only be visible when the smoke clears. I'll start with half-truths. So the NDA government in Maharashtra launched the Ladki Behan. Ma'am, the NDA government in Maharashtra launched the Ladki Behan DBT scheme for women in Maharashtra just before the assembly elections last year to use it as a political bait. Now with the elections over, they have conveniently started scrutinizing beneficiaries, thus removing 60 lakh women from the scheme. This is yet another Jumla running deep in your veins. And people see through this betrayal and they are watching. Another betrayal, ma'am. Before the elections, the government promised a legal guarantee for MSP. After the election, the promise have disappeared without a trace. Madam Finance Minister is here and I'm glad she's present in the House. She in her speech mentioned that, and she began her speech with a flourish on agricultural growth. But when it came to MSP, the one demand that every farmer of this country has raised, there was only silence. No legal guarantee, no relief from the crippling debt,
instead of waiving farm loans, the government has increased the Kisan credit limit, which essentially means handing farmers more debt than relief. If any corruption happens in any part of the state, total amount of money, why it is being kept stocked, where possibility of inquiries appears, central team, state team jointly detected any area, stop sending money over there. But for few places or for one or two places, you are blocking the total money. What would be my suggestion, what would be my request to you, to release the amount to the particular state who have due from the center more than 1 lakh crore of rupees as a whole. So would you kindly take up these two issues, Manrega and Awas Yojana? I also want to request you, wherever corruptions reports are there, block money over there. But don't stop the full money as for so many as a whole for the total state. But haven't we stopped it on that ground only now? Yes. Please, Honourable Member. Ma'am, Chairperson, the Honourable Member is putting forth a suggestion, saying stop it where the corruption has happened, don't stop entirely. We've not stopped entirely for all over the country. We've stopped where the corruption has happened. उनके सुझाव है कि मैं पूरे देश में रोकना नहीं है, जहां करप्शन हो रहा है वहां रोकने के लिए। मैं वही तो कर रही हूं, बंगाल में करप्शन हुआ उसको रोकूं। मैंने गलत समझा है क्या? हाँ हाँ जी, आपके ओन स्टेट के विषय में ही मैं बोल रही हूं ना। यू वांट इंग्लिश और यू वांट माई टूटा फूटा हिंदी? Oh, you're saying in the state of Bengal, जहां करप्शन हुआ वहां ना देना, बाकी जगह पर देना। ये मैं कैसे तय करूं जी? मैं कैसे तय करूं? Madam Chairperson, even when I don't stop, even when I don't delay, even when I give an advance payment of, when I have to give 1 month, I'm giving 2 months, I'm accused of differential treatment to different states. अरे corruption हुआ ये साबित हो गया है, और सेंट्रल टीम और स्टेट टीम भी साथ में गए हैं, और उधर पेमेंट का रिक्लेम करो, ऐसे आदेश मिलने के बाद रिक्लेम ना करते हुए दोबारा ट्रेशरी से ही उसको भरपाई कर रहे हैं, मतलब करप्शन हुआ। उसके बाद मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं? पूर्व मेदिनीपुर में नहीं हुआ, नॉर्थ बंगाल में हुआ नहीं, साउथ परगाना 24 परगाना में, मैं कैसे तय करूं? मैं कैसे तय करूं मैडम? और तय भी करूं, किसको मान्यता होगा? बंगाल चुपचाप अगर मानते हैं तो भी बाकी स्टेट्स मुझके ऊपर को गुस्सा नहीं करेंगे? ये आप कौन होते हो करने के लिए? सो पूरे इसको साफ करने के लिए मैं आपके द्वारा रिक्वेस्ट कर रही हूं, बंगाल गवर्नमेंट को साफ करो भाई। फिर आते हम, जितना भी प्रश्न उठाया गया उसको स्पष्टीकरण दो, एक्शन में दिखाओ, फिर कौन रोकने वाले हैं आपके पैसा? बिल्कुल देंगे, आपके पैसे देंगे। दिन तक आप ये करेंगे, आपका जो पर्पस to make your party more influence in the state, it will never happen. Result will always be 6-0. Give money to the state. Poor people, hungry people are crying for hunger. So take care. I repeat I request you with folded hand, sare taka, all money being kept detained. It cannot happen for a particular state. Madam Chairperson, I fully appreciate the concern.
our intention is not to put anybody to difficulty. But strictly, if you allow me 1 minute of indulgence, for the political observation which honorable member has made, आप जब तक ये करते रहोगे आपका सीट नहीं मिलेगा बंगाल में, मान लो ये सच है, फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? खुश रहो, पूरे जीतो, पूरे आराम से बैठो ना। हो रही है दिक्कत, जनता देख रही है, गरीब के पैसा किसके हाथ में जा रहे, पार्टी वर्कर्स में हाथ में जा रहे, ये अभी खुलासा हो गया है, इसीलिए दिक्कत हो रही है उधर, इसीलिए दिक्कत हो रही है। और जब हम उसके लिए तैयार हैं, आते हैं स्टेट में, आपकी टीम के साथ ही जाते हैं, अकेला नहीं जाते हैं, आपके टीम साथ में रहने के बाद भी दिखता है कि घपला हुआ, उसको सही करने के लिए मौका भी देते हैं, फिर भी आप यही राजनीतिक भाषा बोलते हो, नहीं जब तक ये करोगे बीजेपी नहीं आए। नहीं जी, देश अच्छा होना है, मोदी जी का संकेत यही है, अच्छा करप्शन रहित गरीब को जो पैसा मिलना है वो मिलना चाहिए, जहां घपला होते हैं हम साथ नहीं रहने वाले। अभिषेक बनर्जी बोलेन এটা বাংলা বিরোধী বাজেট, বিহারকে দেওয়া হলো বোনাঞ্জা, বাংলাকে অর্থনৈতিক অবরোধ করা হলো। লোকসভায় এভাবে নির্মলা সীতারমণের বাজেটকে তুলোধনা করলেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ তথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্মলা সীতারমণের বাজেট ঘোষণার পরই বিহার কেন্দ্রিক বাজেট বলে কটাক্ষ করেছিলেন অভিষেক। এদিন বাজেট আলোচনায় লোকসভায় দাঁড়িয়ে আরও একবার সেই প্রসঙ্গই তুললেন। বললেন, বাজেট দেখে আমার মনে হচ্ছে অর্ধেক যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো শব্দটি একেবারে যথাযথ হবে। এমন শব্দ আপনারা হয়তো আগে কখনো শোনেননি। এমনটা কেন? বিহারে জেডিইউ এর 12টি আসন রয়েছে, বিজেপিরও 12টি সাংসদ আছেন, বাংলাতেও 12 জন সাংসদ বিজেপির। তবে বিহারের ক্ষমতায় রয়েছে তারা, আর বাংলায় নেই, তাই বিহার পেল বোনাঞ্জা, বাংলা পেল ব্লকেডার। অভিষেক আরও বলেন, বাংলার জন্য কোনো অর্থপূর্ণ বরাদ্দ করেনি কেন্দ্রীয় সরকার, এটা বাংলা বিরোধী বাজেট। বাংলার বকেয়ার পরিসংখ্যান তুলে ধরেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। তার কথায় 1.7 লক্ষ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। এটি বাংলার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকে রাখার চেষ্টা। ইচ্ছাকৃতভাবে আর্থিক বাধা তৈরি করা হচ্ছে। মনরেগায় 7,000 কোটি টাকার বকেয়া, কর্মশ্রী প্রকল্পে জব কার্ডধারীদের নিজেদের টাকা থেকে কাজ দিচ্ছে। 8,140 কোটি টাকা দেয়নি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায়, 12 লক্ষ উপভোক্তা বাড়ি পাননি।